Hey everyone, welcome back to my channel, and today's video is BGP Border Gateway Routing Protocol. We will configure it in Cisco Packet Tracer by using Cisco routers. So let's start the configuration. Let's assign the IP address. IP address is to R1, enable to 55.0. Notion. Router 2. IP address 192.168.11.1. IP address 10.0.0.2. Subnet mask, no shutdown. So step 3 is configure BGP on router 1. यहाँ पे AS में लिख देते हूँ. Router BGP 100, neighbor 10.0.0.2, remote is 200, network 10.0.0.0, mask 255.0.0.0, network 192.168.10.0, mask 255.255.255.0. Exit. Enable configuration terminal. Router BGP 200, neighbor 10.0.0.1, remote AS is 100, network 10.0.0.0, netmask 0.0, network 192.168.11.0, mask 255.255.255.0. Exit. Show IP BGP summary. See, the router is 11.1, local AS number is 200, और यहाँ पे जो नेबर राउटर है हमारा 10.0.0.1, उसका AS भी हमें यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. और एक कमांड है शो IP BGP नेबर. तो यहाँ पे देखो BGP नेबर इज़ 10.0.0.1, रिमोट AS नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है. राउटर आईडी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है. वी कैन चेक शो IP route also. Show IP route. Yeah, here is the BGP via 10.0.0.2. ये जो हमारा नेबर राउटर है 11.0,
BGP हमारा कनेक्शन हो चुका है. नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर PCs ऑल्सो. इसको असाइन कर देते हैं IP एड्रेस. लेट्स से ये पिंग होता है नहीं. पिंग 192.168.10.11.3. Yeah, pings are successful here. So we successfully created a BGP lab. If you found this video helpful, don't forget to subscribe my channel and comment below if you want me to cover any specific topic. See you in the next video.